Assalamu alaikum. Welcome to lecture 13 of data mining. So today we will discuss decision tree learning. We will discuss how a decision tree is learned for a classification problem. And then we'll also briefly discuss how a decision tree is learned for a regression problem. And we will also discuss some of the issues in the standard decision tree learning problem. And if we have time, we will also discuss the forest and random forest. So that is basically the agenda for today. Uh, of course, this is all we will cover for classification. We won't go very deep into classification in this course because classification is covered in more detail in other courses at LUMS. Decision tree, of course, is a powerful classification technique. It is also quite intuitive as well, in the sense that the tree that is learned using decision tree learning is actually quite interpretable. So you can explain why you have made a particular decision using the decision tree, because a decision tree essentially looks like a set of, it basically looks like a rules where you have decisions made uh, regarding various attribute values, and then you have the final class label. So that's the agenda for today. So again, just a reminder, we have our exam on Saturday. Uh, it will cover all material till today uh, that we have covered till today. And I will also send out a brief syllabus list later tonight, but it will cover, as I said, everything that we have covered in class till today. So for the exam, you can bring a help sheet, a single page, A4 size, double-sided. You should bring pencils and pen and a calculator. So you are not required to use a mobile phone. And the time is 10:30. I think the room is Said Segal in academic block, SS academic block. The exam would be, of course, of about 2 hours long. You will have two parts. The first part would have about 15 questions, like the ones that you saw in your quizzes. And then we will have a second section, which will have 2 to 3 questions. These would be slightly longer questions, uh, but of the same type, where you actually have to do something, run an algorithm, or uh, show something that we have covered in this course. So usually, as you have seen already, I do not check for, do not test, let's say, definitions. More or less, I check concepts, ideas, and their application. Okay, so any questions? Any questions? For classification as well as for decision tree learning, you can look at chapter 7 or chapter 8 of your textbook by data mining, uh, textbook data mining concepts and techniques. Uh, but some of the things that I will cover in class may not be in that book, so you can follow the lectures as well. All right. So decision tree learning. So as I said, this is from a classic machine learning perspective, this is a classification problem. In general, of course, decision tree learning can also be used for regression, which we'll talk about later on. So what is the classification problem? You learn a model phi, which takes an input x from a possible set of all inputs x, which is a space of all possible inputs, which in machine learning is also called the instance space. Given this input small x, you are able to produce a output C, which is coming from a set capital C. The set capital C in general
it's a set of labels. So 1, 2, 3. Okay. So these are labels. They are not numbers, they are labels. So I can call one, let's say, uh, one particular label depending on your problem. It could be spam, two could be not spam, and so on. But just to identify them, I've given them numbers. So they are not real, they are not numeric, they are basically labels, discrete. So we want to learn that phi. In decision tree learning, phi is a decision tree. So you're all familiar with the structure of a decision tree. So decision tree has nodes and edges. You have one node at the root, at the top, and then you have edges following from coming down from that node. So after each edge, there's another node, and then you have edges until you reach the leaf node of the tree. So leaf node, so basically nodes can be either decision nodes, nodes which are internal nodes, or they could be class nodes, or you can say just class labels, which are basically leaf nodes. And then of course you have edges. Okay, so edges of course define the possible options after each node. So if you want to construct this decision tree, you want to construct it based on your data set, which we call the training data set. So training data set would consist of inputs X. Of course, you will have multiple of those inputs, and Ci. So I is equal to 1 to n. So you have n training examples. So this is your training set. Okay? So for your problem, you have your input and you also have your output, some sample from your entire population. Okay? And you want to use this to build a tree. Once you have built the tree, which by the way is the knowledge that you have learned from data mining, you can then use that tree to make future predictions. Given a new X, it will tell you it's C. Okay, now let's take a concrete example. I'll just do a small example and then I'll go back to notations again. So let's say our problem is to classify the category of a customer. And let's say there are two possible categories. So C is two possible categories. So we have, uh, you say you can saw premium customer, or the second one could be regular customer. Simple binary classification problem. So the class label is either premium, the customer is a high buyer in your organization, is a preferred buyer, and then regular is a regular buyer, normal buyer. And let's say, again, just for simplicity's sake, we have a very simple attribute set. So let's say we have gender, and then we have so job rank. So let's say you have for each customer the gender and job rank. As let's say gender is basically has two possible values, male and female. And then job rank, you have, let's say, three possible values. Let's say, uh, so let's say junior, sorry, some three possible job ranks. You can use probably those at LUMS. So assistant manager, AM, then manager, and then senior manager. Okay? So your data set would look like this. You have gender. This is the training data set, gender. And then we have job rank. And then you have the class. So you will have various people like male,
gender, job rank, let's say assistant manager, and the class is, let's say, so let's say regular. Okay. And similarly, you have female, let's say job ranks senior manager, and then let's say this is premium. So you have data set like this. So from this data set, you want to build a tree. So as you know, a tree consists of a node at the root. So the first decision is, and later on as well, later decision, how do you select which attribute to make a decision at the start? Okay. So broadly speaking, decision tree learning is a divide and conquer way of building a tree. So if you think of it in terms of algorithmic, divide and conquer. And secondly, it's also greedy based on the criterion. So we want to select one node at a time, and we will do it greedily. And of course, to do it greedily, you need a criteria. So we call that a selection criteria or criterion. So for classification, the most commonly used criterion is called information gain or IG. Actually, information gain is almost it's actually identical to entropy, but we use this name more commonly in decision tree learning. So what is the idea here? So let's say in our example, we have two attributes. We have G, which is gender, and we have the other attribute job rank. So we have two options at the start. So which attribute should you choose to make a decision at the root node? Okay. So how can you make such a decision? We will use a criterion, in this particular case, information gain. Okay. So how does information gain works? So information gain, as I said, is based on entropy. Okay. So let me write entropy first. So what is entropy E? So entropy is a measure of impurity or inhomogeneity of a data set. Okay. So let's again take an example. Let's say you have, so we will consider each attribute set separately. So we have gender, okay, and then we have class, okay, and we will rank, we will basically group gender according to the class. And of course, we have two classes. So let me group them from the training set, So let's say we have male here, and this is, let me write all, let's say we have premium, let's say premium, okay, male is premium. Then we have another male who is also premium. And then we have a female who is also premium. So let's say we have three here. And then let's say we have a female, which is regular. We have a female, which is regular. Okay. And then we have a male, which is regular. Okay. So we have kind of categorized our genders into the two classes of our problem. If there were multiple classes, of course, you will have multiple groupings of gender. Okay. So now you will find the impurity of this grouping. So you have an impurity before the grouping, and you have an impurity after the grouping. So in this small data set, so you have three premium and three regular customers, right? So if you want to find the entropy for this set, let's say this data set is a complete data set, let's say D. Okay. Just write D there. Entropy of the entire data set. So entropy is defined, of course, as, I think you already know this, so minus. So for each proportion of the group, what is that proportion? If you just look at the whole data set, you have three
regulars out of 6 total data set, then multiplied by log of 3 divided by 6. So this is one group. There, how many groups do we have? We have 2 groups. So you have to sum for all groups, this minus value. So you're summing this minus value for all groups. So you have the second group, which is 3 over 6 into log 3 over 6. Usually this log is base 2, but you can use any other base as long as you are using it consistently. Mhm. Okay. So we got a value of 0.69. ठीक है, if we had used log 2, ये जो 1 होना था, ठीक है, तो log 2 हमने यूज नहीं किया, तो I think this is computing using log 10 या natural log. ठीक है. So by the way, log 2 में you can actually do it very easily. So आपके पास क्या है, log 2 आप निकालते हैं of 1 divided by 2. ठीक है. What is this? 2 raised to power of minus 1 होता है ना. So this is log 2 raised to power of minus 1. This is equal to minus 1 log 2, or log 2 is basically uh, uh, so basically log 2 of to the base 2 is basically uh, that would give you a value of just a second, what's happening here. ठीक है, सही है. ठीक है, so that would give you a value of 1, so this will give you a value of minus 1. ठीक है. And of course you have the fraction in front of it as well. ये minus 1 है, तो minus 1 ये हो गया, minus 1 multiplied by minus 1 over 2, 1 over 2 हो गया, 1 over 2 plus 1 over 2 will give you 1. ठीक है. Of course, okay, log 2 लेंगे तो ये 1 होगा. ठीक है, बट खैर कोई भी बेस ले सकते हैं आप. And you got a value of 0.66, ये ऊपर हमने आंसर निकाला है. ठीक है. So this is the entropy before we did grouping based on gender, or group before we basically split this data set using gender. ठीक है. हमारे डेटा सेट में 3 प्रीमियम्स थे और 3 रेगुलर्स थे, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था. ठीक है. सो नाउ इफ यू नाउ स्प्लिट द डेटा सेट यूजिंग जेंडर, तो जेंडर कुछ मेल है कुछ फीमेल है, कुछ प्रीमियम्स उधर चले जाएंगे, कुछ आपके पास. सो बेसिकली now you have to split the data set using the value of gender. So we have one M premium, ठीक है, दूसरा M premium, F premium, ठीक है. ठीक है. So we have 3 M. So if you split using M जब स्प्लिट करेंगे तो उसके ऊपर जब आपके पास जो सेट आएगा, जो 2 वैल्यूज आएंगे आपके पास, 2 आपके पास प्रीमियम्स आएंगे और 1 रेगुलर आएगा. ठीक है. एंड इफ यू स्प्लिट यूजिंग फीमेल, ठीक है, you will get 2 premium, I think, no, 1 premium and 2 regular. ठीक है. So if you split the data set using this attribute, 2 ब्रांचेस बन जाएंगे. एक ब्रांच में आपके पास मेल की ब्रांच में 2 प्रीमियम आएंगे, 1 रेगुलर आएगा. फीमेल की ब्रांच में 2 रेगुलर आएंगे, 1 प्रीमियम आएगा. So now we can compute the entropy after the split. ठीक है. So of course there are two groups now, तो दोनों का सेपरेट निकलेगा हमारे पास. So let's say मैं निकालता हूँ for entropy of male after the split. ठीक है. So this is male, आपके पास 2 थे, right, -2 divided by 3, total 3 है, 2 over 3 minus
1/3 log 1/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। एंट्रोपी फीमेल का भी निकलेगा। सो उसमें भी एक्चुअली यही वैल्यू होगी, बिकॉज उसमें दो रेगुलर्स हैं और एक प्रीमियम है, उल्टा है, बट ये सम इक्वेशन वही बनेगी। ठीक है, 0.63 ये आया, तो दूसरा भी लेट से 0.63 आया। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू वैल्यूज आफ्टर द स्प्लिट, इनका फिर आप एक वेटेड एवरेज ले लेंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ईच प्लेट। यहाँ साइज एक्चुअली दोनों के सेम है, पहले मेल के भी 3 है, फीमेल के भी 3 है, तो अगेन इन दोनों का एवरेज वही बनेगा। बट इफ आई वांट टू राइट इट ई, so after using gender as a splitting attribute would then be basically तो आपके पास पहले स्प्लिट में 3 थे, टोटल 6 था, इंटू 0.633 प्लस अगेन 3/6 इंटू 0.633, दिस विल गिव यू 0.633। ठीक है, so this is the entropy E. Gender is entropy after the split. So information gain for gender is basically given by E minus E gender। ठीक है, विच इज हमने ई पहले निकाला था पूरे डेटा सेट का बिफोर द स्प्लिट, 0.69, राइट। 0.69, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 0.69 समथिंग माइनस 0.63। So this is the information gain that you get if you split the data set using gender. The original data set homogeneity was 0.699. After splitting the data set using gender, the homogeneity actually increased. So actually, lower values are considered better, more homogeneous. Higher values are inhomogeneous. तो हमारे पास कोई information gain मिली है by splitting using gender, which is of course quite small, 0. ठीक है, 0.069। ठीक है, so this is the information gain and this is the criteria for selecting the attribute। so ये हमने gender के लिए निकाला, इसी तरह आपने IG दूसरे के लिए भी निकालना है, जॉब रैंक के लिए। उसमें भी वही ई निकलेगा, पहले ई वही होगा जो पहले था, माइनस ई ऑफ जॉब रैंक आफ्टर द स्प्लिट, इसकी भी कोई वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा जिसकी सबसे ज्यादा गेन होती है, यू विल सेलेक्ट। so that attribute is most suitable for distinguishing between these two classes, which is premium and regular customer। ठीक है, so let's say इस हमारे एग्जांपल में let's say job rank has been selected, so assuming job rank is selected, ठीक है। So if job rank is selected, so you have now decided a root node। So root node is basically job rank। ठीक है, अब job rank एक node है, अब उसके ऑप्शंस जो एजेस हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर जॉब रैंक है। तो ये दे आर नाउ 3 पाथ्स फॉलोइंग फ्रॉम जॉब रैंक। तो लेट्स से मैं जॉब रैंक का नोड बनाता हूँ जे, एक पाथ होगा जिसमें जे इज इक्वल टू असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है,
और दूसरा पाथ होगा जे इज इक्वल टू मैनेजर, और तीसरा भी होगा, वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। एस एम, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये ट्री मैंने थोड़ा कन्वोल्यूटेड बनाया है, यू कैन जस्ट शिफ्ट इट लाइक दिस, तो नीचे चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो देयर थ्री ऑप्शंस फॉलोइंग जॉब रैंक। अब ये जो प्रोसेस है हमारा सिलेक्शन का, इट विल नॉट रिपीट एट द एंड ऑफ ईच एज। पहले तो हमने रूट पे स्टार्ट किया था ना, जब पूरा हमारा डेटा सेट था। नाउ एट द एंड ऑफ ईच एज ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस फिर रिपीट होगा। वो किस तरह होगा, लेट्स जस्ट टेक ए क्विक एग्जांपल। लेट्स से हम पाथ लेते हैं जॉब रैंक असिस्टेंट मैनेजर। सो जॉब रैंक इज इक्वल टू एम। इस पाथ में हमने सिर्फ वो डेटा सेट कंसिडर करना है जिसमें जॉब रैंक असिस्टेंट मैनेजर हो। बाकी वाली वैल्यूज हमने लेनी ही नहीं है। मतलब ये वो वाला डेटा सेट है जिसमें जॉब रैंक सारे असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो सो इफ आई लुक एट द प्रीवियस डेटा सेट, वो अब काफी ऊपर बना था। ठीक है? अच्छा, मैंने जॉब रैंक का लिखा ही नहीं था। अच्छा, ठीक है। ऊपर लिखा था शायद, क्या एक सेकंड, नहीं लिखा था, ठीक है। ठीक है। So now we'll only be working on that subset of the whole data set in which job rank is AM। मतलब सारे असिस्टेंट मैनेजर्स के ऊपर वर्क करेंगे हम। तो लेट्स से ओरिजिनल डेटा सेट जेंडर है और जॉब रैंक है और क्लास है। तो उसमें जिस तरह भी हमारे पास बेशुमार कुछ होगा, मेल होगा, जॉब रैंक इसका हो सकता है AM हो सकता है, और इसका क्लास प्रीमियम हो सकती है, ठीक है। एक फीमेल है, उसका जॉब रैंक सीनियर मैनेजर हो सकता है, ये भी प्रीमियम है, एंड सो ऑन। तो वी विल ओनली लुक एट दैट सबसेट इन विच जॉब रैंक इज AM। अब वो हमारा डेटा सेट होगा। अब उस डेटा सेट में जो बाकी एट्रीब्यूट्स रह गए हैं, उसमें इन दिस केस देयर इज ओनली जेंडर, बट लेट्स से इन जनरल देयर विल बी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, दो से ज्यादा ही होंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में। उनमें से फिर आपने डिसाइड करना है बाय द सेम अप्रोच। यू विल कंप्यूट एंट्रोपी ऑफ द डेटा एट द नोड। मतलब ये जैसे हमने शुरू में किया था, इट वाज अ कंप्लीट डेटा, but at a later stage this will be data that is filtered to that edge। इस केस में वो वाला होगा डेटा जिसमें सारे जॉब रैंक AM होंगे। so this is the filtered, so we will compute E uh, for the data at that node, and then we will compute E after splitting this data using an attribute that is remaining। रिमेंबर, एक एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, जॉब रैंक ऊपर यूज कर लिया। अब रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स में से जेंडर है, मे बी सम अदर एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, इनकम हो सकते हैं, सो ऑन। उनमें से हमने ई निकालना आफ्टर द स्प्लिट, और यहाँ से फिर IG निकलेगा, एंड देन सेलेक्ट द एट्रीब्यूट विद हाईएस्ट IG। सो इन अदर वर्ड, ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, ये रिपीट होता है रिकर्सिवली एट ईच नोड, and the data at each node is the one that is filtered at that node or that comes to that node। स्टार्ट में तो सारा डेटा सेट था जैसे हमने ऊपर निकाला, बट बाद में जो सिर्फ उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा टू रीच दैट नोड, वो वाला होगा। एंड देन यू रिपीट until you have no more nodes or you have reached a pure state। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन गेन एक्चुअली thus measures how well this attribute increases the purity of the remaining data set that is filtered। गेन कितना हो रहा है,
और प्योरिटी हम किस तरह मेजर कर रहे हैं? बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास लेबल्स। इफ एक ग्रुप में, एक फिल्टर डेटा सेट में सारे हमारे पास रेगुलर और रेगुलर और रेगुलर आ जाएं, तो इसकी प्योरिटी 100% हो जाएगी। सो फॉर एनी प्योर डेटा सेट उसकी एंट्रोपी क्या होती है? सो एंट्रोपी बेसिकली, लेट्स से कोई भी, लेट्स से कहते हैं ग्रुप में 10 मेरे पास आ गए हैं और सारे 10 एक ही क्लास के हैं, रेगुलर हैं, ठीक है? सो यू विल हैव व्हाट, 10 डिवाइडेड बाय 10 into log 10 divided by 10. This would give you 0. ठीक है? So purity would have the lowest value, which is 0, and impurity would have higher values. And depending on the log that you take and the number of classes, that higher value ceiling might be different. So log 2 लें और दो classes हो तो highest value 1 होती है. But for different logs and for different number of classes, high ज़्यादा भी हो सकती है 1 से. But of course, that is irrelevant. We still want to select the best, and best one is the smallest entropy that after the split. वो किस तरह मेजर कर रहे हैं? हम IG से कर रहे हैं. IG would be the highest. Remember, by the way, IG किस तरह निकलता है? IG for any attribute A is basically E at that node minus E by splitting at A. So remember, E at a node is the same for all attributes. So इसका मतलब है कि conversely you can decide which attribute to select by this term only, E of the attribute. If the E after the split of an attribute is the minimum, वो आप attribute select कर लें, because वो उसका IG सबसे ज़्यादा होगा. Because E जो पहले लिखा है वो constant है for all attributes. ठीक है? So so that's how you build a tree. You build a tree recursively. You build a tree using this greedy selection criterion, which is information gain. And you by this process, by the way, you also kind of dividing and splitting your data. So it's kind of a divide and conquer algorithm as well. Now the question is, where do you stop? Stopping criterion. ठीक है? और criteria. ठीक है? So एक तो obvious है, actually there are two obvious solutions. So when data at a node becomes pure. Pure का मतलब क्या हुआ? Entropy after the split becomes 0. और entropy at that edge becomes 0. तो मतलब ये है कि वो pure है. All examples will belong to a single class. So you stop there and label that leaf at that edge end as a leaf node with the class label. ठीक है? So basically label the leaf node with class of the homogeneous set. ठीक है? So let's say हमारे एक सेट पे हम आते हैं तो हमको पता है कि सारे वहाँ रेगुलर डेटा सेट आ रहा है. All customers that reach an edge or become fall into a split are all regular. इसका मतलब वो हम वहाँ फर्दर ग्रोइंग स्टॉप कर देंगे, उसको हम एक लीफ नोड बना देंगे. यूजली लीफ नोड इज डिपिक्टेड बाय रेक्टेंगल, और वो उसको लेबल दे देंगे रेगुलर, because all examples falling into that split or edge are all regular customers. So this is the obvious stopping criteria. ठीक है? So another obvious stopping criteria is when you have exhausted all attributes. ठीक है? So let's say हमारे इस प्रॉब्लम में दो एट्रीब्यूट्स थे. जेंडर रूट नोड में लेट्स से आपने जॉब रैंक सेलेक्ट कर लिया, आपके पास 3 एजेस आए नीचे. एक एज पे, अब तीनों एजेस पे आप ऑप्शन आपके पास सिर्फ जेंडर ही रह गया.
तो तीनों के बाद जेंडर जेंडर आ गया. तो अब जेंडर के बाद कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपके पास. सो दैट्स यू कैन नॉट ग्रो योर ट्री एनी फर्दर, यू हैव टू स्टॉप because you don't have any further attribute to split the data on. So that's another obvious stopping criteria. ठीक है? So, but of course, in practice, you will have multiple attributes, and you will not like your tree to grow very big. उसके बारे में आप थोड़ी सी बात करेंगे shortly. So you will have more realistic stopping criterions, and usually the stopping criterion would be uh, based on some performance measure. So, for example, entropy at node becomes less than some small value. ठीक है? So it not pure होगा जब zero होगी entropy. ठीक है? But still we don't want to go to the pure state because the tree might grow too big. So हमने एक small value रख दी 0.01. जैसे ही 0.01 से नीचे आती है उस एक किसी split की entropy, तो हम further growth खत्म कर देंगे. ठीक है? So you can use that as well. Plus, sometimes you can also specify uh, a depth of the tree. This is, of course, user specified. So when depth of tree, so stopping criteria, so becomes equal or equal to जो भी आपने user specified depth. ठीक है? So you can also use such user defined criterion as well. ठीक है? So any questions so far? All right. So in this way, you can build or learn a decision tree for a classification problem, given that you have a data set which has the attributes as well as the class labels, meaning that it's a supervised learning problem. And so far, we have looked at a data set in which the attributes X are all discrete or categorical in nature. So we have not talked about attributes that were continuous. We'll briefly talk about that later on. So, so before moving on, let me mention another criterion, selection criterion or criteria. So instead of entropy, remember previously we used entropy. So we can also use Gini impurity. So this is another measure, impurity or Gini index. Okay. So instead of entropy. So information gain उसी तरह निकलेगी. Information gain जैसे पहले थी entropy minus entropy after the split. यहाँ भी let's say if you use Gini, then it would be information gain would be Gini before minus Gini after. तो Gini है क्या? Just a different formula. This measure comes from economics, but it is also used in machine learning as well. So previously हमने जो groups बनाए थे, for example, हमारे पास जो previous original data set का group था जिसमें 3 premiums थे, so 3 premiums और 3 regulars थे, ठीक है ना? So this were the 2 groups, 6 data set था. तो इसका हमने एंट्रोपी पहले निकाली थी, तो इसकी जो जिनी निकलेगी वो इस तरह निकलती है. इसका फॉर्मूला एसेंशियली ये है 1 which is a constant, and then you minus
the product of all proportions. You minus the square of the proportions of all groups. So आपके पास दो proportions है ना, दो groups है ना, तो उसका पहले का हमारे पास जो था 3/6 proportion 3/6 है, इसका square किया, तो again minus 3/6 इसका भी square किया. So you get a value of 0.5. In general, the Gini is defined as in this way. 1 minus, we have the summation here, I is equal to 1 to K. K आपके पास groups हैं of P, I, square. P is I, of course, the proportion of group I. So आपके पास K groups हैं, तो so you will basically sum all of those, take the minus and basically subtract it from 1. And again, this value is, best value would be 0. Higher values would mean more impurity. Okay? So instead of entropy, you can use Gini as well. Although this is now less common, but कुछ problems के लिए आप use कर सकते हैं. Entropy is the more commonly used approach. There are some traditional approaches, decision tree learning algorithm जो Gini prefer करते हैं. For example, is an algorithm called CART, जिसमें Gini use होता है. Classification and regression trees. ठीक है? Okay, one more major selection criterion, which is actually also mostly entropy based. This is called gain ratio, GR. So previously we had computed information gain. Information gain IG था. Let's say किसी भी attribute का A का आपने निकाला था E minus E of A, right? इस तरह निकाला था ना? So information gain for one attribute. So IG of any attribute A is basically, sorry, gain ratio is the information gain of A divided by the intrinsic value slash information of attribute A. Let me write the formula first and then we will look at the intuition behind it. What is the intrinsic value of A? So intrinsic value of attribute A is basically the number of groupings that A would lead into. It's based on the number of grouping that A would produce. So let's say A attribute A है, let's say gender हमारे पास था 2 possible values थी, while job rank gives you 3 possible values. So the job rank would produce 3 splits or 3 groupings, and gender would produce 2 splits. ठीक है? So gain ratio would increase for attributes that produces more splits. And the intuition behind this is that attributes that produce more splits are naturally making the data more classifiable, but intrinsically that attribute is not really benefiting the classification. So for example, let's say आपके पास एक attribute है, let's say ID है, customer ID एक attribute है. So customer ID is unique for each customer. If you use this attribute to split the data, let's say आपके पास 10,000 customers हैं, ये attribute आप use करेंगे तो आपके पास 10,000 branches आ जाएंगी और हर branch में सिर्फ एक ही customer आएगा. जब एक ही customer आएगा, that example for sure, that split for sure would be pure. ठीक है?
फॉर श्योर, बिकॉज आइदर वो प्रीमियम कस्टमर होगा या रेगुलर कस्टमर होगा. बट दिस एट्रीब्यूट is not generally helpful for future classification. बिकॉज फ्यूचर क्लासिफिकेशन में आप एट्रीब्यूट के बेस पे तो नहीं क्लासिफाई कर रहे, हम करेंगे बेस्ड ऑन सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कस्टमर. So this generic idea, this general principle of if an attribute naturally splits the data in large number of uh, branches, it will naturally produce purer uh, uh, groups, but those purer groups are not really helpful for classification. तो उन एट्रीब्यूट्स को वो थोड़ा सा पेनलाइज हम करना चाहते हैं. तो उनकी हम इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ाएंगे. विल इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज रिमेंबर इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइड हो रहा है. तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जब बढ़ा देंगे तो उसकी गेन रेशियो थोड़ा सा कम हो जाएगा. ठीक है. सो इंट्रिंसिक वैल्यू हम फिर किस तरह निकालते हैं. सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट ए is basically computed as using entropy, of course, as minus uh, let me write the entropy formula of sum I is equal to 1 to k ही लिख लेता हूँ मैं. पहले k हमने यूज किया था क्लास के लिए, ऑफ p log p I. ठीक है. So where p I is the proportion of data belonging to value or to ith value of attribute A. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास, जैसे मैंने 10,000 एग्जाम्पल्स दी और आईडी की मैं बात कर रहा था. आईडी, हर वैल्यू आईडी का एक ही कस्टमर को रिप्रेजेंट करेगा. तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली वुड सिंपली बी 10 1 2 3 10,000 इंटू, ठीक है, सम कर रहे हैं ना हम, तो माइनस 1, हर वैल्यू 1/10,000 होगी. हर ग्रुप में सिर्फ 1 एग्जाम्पल होगा. सो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ये होगी. सो विच इज अ लार्ज वैल्यू एज यू कैन सी. तो लार्ज वैल्यू को हम जब डिवाइड करेंगे आईजी से, उसकी गेन रेशियो कम हो जाएगा, एंड दैट एट्रीब्यूट वुड बी लेस लाइकली टू बी सिलेक्टेड. सो यू लाइक टू सिलेक्ट एट्रीब्यूट्स whose gain ratio is high, and gain ratio would be high if ig is high and intrinsic value is low. ठीक है. सो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिकली वो एट्रीब्यूट नेचुरली इतने ज्यादा स्प्लिट कर देता है कि वो प्योरिटी आ जाती है. तो दैट इज नॉट डिजायर्ड. वी वांट वैल्यूज दैट गिव नेचुरल स्प्लिट्स for our particular data set. ठीक है. Is this point clear? So gain ratio, Gini, impurity, and information gain. So gain ratio is basically information gain divided by intrinsic value, and intrinsic value depends on the number of distinct uh, values of a particular attribute. If you have a large number of distinct values of an attribute, intrinsic value would become higher by using the entropy formula. सो हायर का मतलब क्या है कि उसकी अपनी, सिंस यू हैव सो मेनी पार्टीशंस, उसकी अपनी इम्प्योरिटी ज़्यादा है. अपनी इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो हम आईजी से डिवाइड करेंगे तो जीआर कम हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर द 3 मेजर्स दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन.
So now let's briefly talk about regression. I think probably that will be the last topic. We still have about 20 minutes. Okay. So regression. So first of all, regression is also a model phi that takes x as an input from a possible instance space x, but its output is a scalar. You can say y that is on the real line r. Okay. It's a scalar output, it's a continuous output, real number. ठीक है. Input आपका वही x is described by discrete attributes. So far we are talking about categorical attributes only right now. अभी तक हमने numeric attributes की बात नहीं की input में. क्लासिफिकेशन में आउटपुट कैटेगोरिकल ही होती है, डिस्क्रीट होती है, बट रिग्रेशन में आउटपुट कंटिन्यूस होती है. तो इसमें एग्जांपल फॉर एग्जांपल इसी तरह की आ सकती हैं कि वही वाली जो हमने एग्जांपल ली थी, जेंडर हमारे पास एक इनपुट है, कैटेगोरिकल है. जॉब रैंक भी एक इनपुट है विच इज़ कैटेगोरिकल. बट हमारे जो क्लास है, जो आउटपुट है, इज इनकम. Income is a continuous value, right? So we like to know, okay, given the gender, given the job rank, what would be the income of that particular individual? Output हम label नहीं ले रहे, a continuous value, it will range continuously from some minimum to some maximum. So such problems are called regression problems. Output is continuous. Classification में output discrete होती है from a fixed set of possible outputs, while regression comes from the complete मतलब it can be any value from the real line for a single output. ठीक है. So again we want to build a decision tree. Internal nodes decision nodes हैं. Leaf nodes would be prediction nodes. ठीक है. जैसे leaf nodes prediction nodes classification में label nodes से, यहाँ it will be value nodes. ठीक है. We'll mention how those values can be computed. So now what is the selection criteria in this case now? How do you decide which attribute to check at a root node or at a later node? So here, most commonly we use the mean squared error approach. ठीक है? और MSE. ठीक है? So just to take an example, let's say आपके पास कुछ data set था income. Remember now the class is, the output is income, which is continuous. Let's say आपके data set में 6 customers थे, उनकी incomes आपके पास हैं. 6 लोग थे, उनकी incomes हैं. Let's say मैं कहता हूँ 10, एक 20 है, एक और 20 है, 2 20 हो गए, एक 30 है, एक 40 है और एक 50 है. ठीक है. 2 20 30 40 50 and एक 10. ठीक है. So let's say this is my entire data set, 6 examples. So if you want to represent one value, if you want to represent this data set by one value, so you can use the central tendency of this data set, of this income, which is in most cases would be the mean. Continuous values and mean लेंगे आप. ठीक है. So ये mean आपके पास निकाल सकते हैं इसका, which is the most appropriate value that represent the central tendency. And the impurity of this data set can be measured as the mean squared error from this, you can say, best value for this data set. So उसको हम किस तरह लिखेंगे? First of all, you can say कि इस data set का mean निकाल लिया आपने. ठीक है. Let me call it M. So the MSE for this would then be essentially
MSC वुड इसी का ले लेता हूँ 10 माइनस एम, मीन मैंने निकाला नहीं, स्क्वायर प्लस 20 माइनस एम स्क्वायर प्लस 20 माइनस एम स्क्वायर प्लस उसके बाद 30 माइनस एम स्क्वायर प्लस 40 एम स्क्वायर प्लस 50 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये मीन स्क्वायर एरर है। दिस इज a measure of the impurity of this data set which is has continuous values। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये मीन स्क्वायर्ड एरर होगा, स्प्रेड होगा, you can say that this is a measure of the impurity। तो इसी तरह फिर आपने आगे जब आप निकालेंगे, so you will compute the MSE of the data set, and then you have the MSE after the split, let's say splitting using attribute A। So this will give you your information gain। ठीक है, या आप, since MSE of the data set at a particular node is the same, you simply select the attribute A or select the attribute that has the minimum MSE। ठीक है, जो सेकंड टर्म है इसमें, जैसे हमने इंफॉर्मेशन गेन के लिए किया था कि IG एंट्रोपी जो है वो सेम रहती है फॉर ए नोड। सो ये जिसकी वैल्यू, जिस एट्रीब्यूट की ये वैल्यू सबसे थोड़ी होगी, दैट मीन्स दैट डेटा सेट, दैट स्प्लिट इज द मोस्ट प्योर एंड वी विल सेलेक्ट दैट। ठीक है, सो वी विल सेलेक्ट द एट्रीब्यूट फॉर विच द MSE आफ्टर द स्प्लिट इज ए मिनिमम। सो आफ्टर द स्प्लिट उसी तरह ही होगा, दो आपके पास स्प्लिट्स आ रही हैं लेट्स से, तो इसका MSE निकलेगा, इसका MSE निकलेगा, देन टेक द वेटेड एवरेज, जैसे हमने एंट्रोपी के लिए भी निकाला था। ठीक है, and I think the rest of the algorithm remains the same except that at the leaf node आपने, आपके पास जो भी डेटा फिल्टर हो जाएगा उसको आपने लेबल करना है कोई वैल्यू से। वो लेबल बेसिकली यू लेबल इट बाय द मीन rather than by the majority class that we did for classification। So I think वो मैंने मेंशन नहीं किया for classification, label leaf node by class, majority class of data reaching the node। ठीक है, so for regression, so we label the leaf node by the mean of the data reaching the node। ठीक है, once you have the tree, then you can use the tree to make predictions for future examples। उसका जो भी जेंडर है, उसका जो भी जॉब रैंक है, वो आपको उसकी इनकम दे देगा। एक किसी लीफ नोड पे पहुंच जाएंगे, वो इनकम होगी उसकी। So a decision tree can be used for classification and regression, and a decision tree, as we mentioned in the start, is a fairly interpretable model, because if you look at the decision tree, each path from the leaf node back to the root node, leaf node back to the root node is a rule। So each path from the leaf node to the root node is a rule। तो वो rule explain करना बड़ा आसान होता है। So you can have something like this: gender is equal to male and job rank is equal to AM
क्लास लेबल आ जाएगी, लेट्स से असिस्टेंट मैनेजर, क्लास की बात हो रही है. सो दिस वुड बी वन पाथ, एम वुड बी लीफ. तो उसके बाद एक पाथ नेक्स्ट नोड आएगा जॉब रैंक, सॉरी जॉब रैंक आपका एम यहाँ नहीं आएगा, ये बेसिकली रेगुलर होगा, रेगुलर या प्रीमियम. ठीक है. सो रेगुलर क्लास लेबल है विच इज अ लीफ नोड. देन यू मूव अप, यू हैव द नेक्स्ट डिसीजन इज जॉब रैंक. उससे आप मूव करेंगे तो फिर जेंडर का डिसीजन होगा. तो ये एक्स्ट्रा कंप्लीट रूल है. एंड ए ट्री वुड बी ए सेट ऑफ सच रूल्स. So another rule could be gender is equal to male and job rank is equal to, let's say, senior manager. Then we have, let's say, again regular or let's say premium. तो इस तरह आपके पास rules होंगे. So you can convert a decision tree into a set of rules. And including the decision tree as well as the rules, they're easy to explain to others. So that's why they're interpretable. हम बता सकते हैं कि ये क्यों हमने इसको प्रीमियम किया था, बिकॉज इसका जेंडर ये था और उसकी जॉब रैंक ये थी. ठीक है. तो इसके बाद we need to talk a little bit about generalization and overfitting, and then we want to talk about random forest, random trees. So अब हमारे पास 10-15 मिनट रह गए हैं. Should I continue or not? I'm not just debating this. Of course यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ कि आपका मिड टर्म में आ जाए. So but we would like to continue to random forest because those are more commonly used in practice nowadays. Simple decision trees भी use होते हैं, but random forests are quite powerful. They do give much more accurate results. Although उसमें चीजें ज़्यादा नहीं है, just a few more things. So very briefly, let's go on to overfitting. Overfitting is a concept from machine learning. The idea of overfitting is that if you have a model like the model that we have learned, which is a decision tree, if the model performs well on training data, जिस डेटा पे इसको बिल्ड किया है, but poorly on test data or unseen data, then we say overfitting has occurred. ठीक है. So the thing to remember here is that जब भी आप मॉडल बनाते हैं, जैसे in this case decision tree, आपने सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के लिए नहीं बनाना. ट्रेनिंग डेटा सिर्फ आपने यूज किया टू लर्न द मॉडल और बिल्ड द मॉडल. आपने मॉडल बाद में नए एग्जांपल्स के लिए यूज करना है which were not in the training data. ठीक है. So मे बी आपके पास ट्रेनिंग डेटा सैंपल था कस्टमर्स का, बट आपका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है. आपने वो मॉडल उन कस्टमर्स को भी लगाना है. If your model is performing poorly on the remaining customers that were not in the training data set, then we say that your model has fitted the training data. It has overfitted the training data. ट्रेनिंग डेटा को exactly learn कर रहा है because उस पर accuracy या performance high आ रही है, but जब किसी और को एग्जाम्पल दिखाते हैं उस पर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकता. So we would like our models to generalize. ठीक है. So generalization उसकी अच्छी होनी चाहिए. So both of these terms are used in machine learning, overfitting and generalization. Now decision tree, the standard decision tree that we have seen so far is prone to overfitting. It is known to overfit training data unless you take some precautionary measures or do some fixing techniques. So one of the reasons for that is that because you're splitting the data into smaller chunks, right? Eventually वो smaller chunks pure हो जाएंगे. Eventually बहुत ज़्यादा split करेंगे तो eventually वो pure हो जाएंगे. उसका मतलब है कि वो उसने training data exactly learn कर लिया. ट्रेनिंग डेटा तो एग्जैक्टली लर्न कर लिया, बट थोड़ी सी भी डिविएशन उससे होगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उसको किस तरह क्लासीफाई करें.
So we don't want that to happen. If that happens, then of course uski performance on test set would be very poor. Okay. So how can we avoid overfitting? So one approach is basically early stopping. Stop growing the tree before it becomes too big. Make it simple. Stop the tree when it's still simple or small or has few nodes. ठीक है. So early stopping में जो stopping criteria मैंने पहले कहा था वो भी यूज हो सकता है. आप फिक्स कर सकते हैं कि मैंने depth 3 से ज्यादा नहीं जाना, या मैंने entropy at a particular leaf becomes less than 0.05, let's say. ज्यादा कम आप नहीं कर रहे उसको, 0.01 तक नहीं जा रहे, तो it will stop and your tree will stop growing. So that is one approach. Uh, and generally this approach is used with a validation set. So remember we talked about a training set in the beginning that is used to train the data. एक validation set हम एक separate set रख लेते हैं, which you can say is like a test set, but this test set is used as part of the building of the tree. तो वो हम उस पे evaluate करते हैं कि इस पे क्या performance आ रही है. इस पे performance let's say बुरी होनी शुरू हो जाती है, तो then we stop growing the tree because this is like a test set. ठीक है. जो हमारा ओरिजिनल ट्रेनिंग सेट है, लेट्स से हमारे पास ओरिजिनल ट्रेनिंग सेट में लेट्स से 1000 एग्जांपल्स से, उसमें से लेट्स से आप 900 ट्रेनिंग ले लेते हैं और 100 आप वैलिडेशन पे रख लेते हैं. यू बिल्ड योर मॉडल ऑन 900 एंड देन यू टेस्ट योर मॉडल ऑन 100. ठीक है. आप डिफरेंट साइजेस पे बिल्ड करें ऑन 900 एंड टेस्ट इट ऑन 100. जिस साइज पे टेस्ट परफॉर्मेंस, जो वैलिडेशन परफॉर्मेंस बेहतर है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी वाले आप डिस्कार्ड कर देंगे. ठीक है. So you can use this early stopping approach. The other approach which we'll not go into detail is post pruning approach. Pruning approach. So after you have built your tree in whatever way that you want it to be built, after you have built the tree, you prune certain aspects of the tree, make it simpler. आप चीजें उसमें remove करते हैं. पहले तो आप ग्रो कर रहे थे, बाद में आप डिलीट कर रहे हैं. तो इसकी भी उसी तरह की टेक्निक्स हैं, यूजिंग सम मेजर्स एंड यूजिंग सम वैलिडेशन डेटा सेट, बट इसको डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इस कोर्स में. ठीक है. सो पोस्ट प्रूनिंग बाय द वे, इसमें बहुत सब ट्री प्रूनिंग भी होती है और रूल प्रूनिंग भी होती है. ठीक है. सो बोथ ऑप्शंस आर देयर. So I think I will stop here for today. Random trees, very brief, छोटा सा section I will discuss next time. So on Thursday, I will just have a review lecture. तो and for this I will strongly urge you to, आपके पास कोई questions है तो questions लेके आए आप, otherwise वो lecture 10 minutes में खत्म हो जाएगा. ठीक है. नया lecture नहीं होगा, नया content नहीं होगा. ठीक है. So any questions? ठीक है. So if there are no questions, we can end today's session. ठीक है.